So this is an orientation lecture all about Indian Economic Service, the fast track course that we are starting from 7th of January 2025, and the course is basically designed for 2025 exam. So in this orientation lecture I will be basically discussing with you how to approach and what will be the syllabus part, and obviously we will discuss the result and the cutoff for 2024 which has been just declared, and how to approach the test series, the daily answer writing practice, what will be the sources, what are the content, and how you can cover the entire syllabus in a shorter span of time without compromising on the content part. So although it is saying a fast track course, but it is not compromising any content. The content will be complete, that means it is not a crash course, we can say, where you are just studying the limited aspect of the syllabus. The coverage will be 100%. So the coverage of the syllabus will be 100%, but we are calling it fast track because you will be able to cover it within a period of, let us say, 4 months. So 125 days we are basically saying. The content of Indian Economic Service, because it is very vast content, it takes about 250 plus number of lecture, but we will be able to do that 250 plus number of lecture in a hybrid mode. That means we will try to complete or cover most of the lecture in the offline session, but few topic and few section you will have to see in the recorded format. That means it will be a combination of live lecture plus the recorded one. You can attend that lecture in the offline also, as well as it is available for the online platform. So it is basically a hybrid course which will be having, we will try to balance it, that means about 50-50, or you can say 60% in the offline, 40% in the uploading, but you can say a fair estimate will be about 50-50. So we will be able to complete, let us say, every day. If you have one lecture, so 125 days हो गए, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर अगर आप कवर करते हैं, दैट मीन्स एवरी डे इफ यू कवर 2 लेक्चर, तो ये फिजिबल है दैट वी कैन कवर द एंटायर सिलेबस इन द ऑफलाइन. सो विल ट्राई टू कवर most of the content, which one is difficult to understand and which require more explanation. We will try to cover that part in the offline, that is live section, and some basic concept or static concept we will cover in the recorded format. So it is basically a combination of that too. So first part will be basically I will discuss the first of all the result of 2024, the cutoff of 2024, because that is very important, as the cutoff for this year has increased marginally. So first discuss that result part, that means what you are aiming for, how much score you are aiming for, and then we will discuss the syllabus part of it, the content part of it, the test series, and so on. Clear? So first the result part. In this result part 2024, this is the final result of 2024. I will discuss their respective marks as well, because that has been also declared. So the vacancy in total was 18, and out of that 18, 15 students are from the placement studies, from the regular batch like Anurag Gautam itself, then from the test series category, from the interview section. So combining all, we have a selection of 15 out of 18, and not only this year. So this year topper is Anurag Gautam, but just you have to see the profile of those students, in the sense how much time they have taken and how much time they have devoted. So as far as time is concerned, this student was preparing from 2020. So 2020 he was preparing for the civil services. He took the class for civil service. Then later on only the specific topic for the Indian Economic Service, which is generally the pattern here also, that we cover the combined, the common topic in one class, in one batch, and the specific topic is covered separately for the Indian Economic Service, because 60-70% content is, you can say, common between civil service and the economic service. I will discuss what is the major difference, or mainly the difference in the General Economics 1 paper. And in the 2023 the result was this 13 out of 18, and in the previous year 2020
again 14 out of 23. So consistently students have done well. Now just focus on the current cutoff, and obviously you will be interested in knowing how that cutoff has moved from the past year. So the cutoff for this year, okay, this is for Indian Economic Service 2024, you just declared yesterday. The marks of only selected candidates will be declared. The marks of those who are not selected is yet to be सेंड और अपलोडेड. तो जो सेलेक्टेड है वहाँ से आपको ऑब्वियसली कट ऑफ का आइडिया लग जा रहा है. सो फॉर द जनरल कैटेगरी इट इज़ 430 आउट ऑफ 1000 इन द रिटन, एंड आफ्टर इंटरव्यू इट इज़ 568. 430 out of 1000, so 43%. Last year it was just 408 out of 1000, so less than 41%. So you can say an increase of 22 marks. So that is significant. 22 marks का increase हो गया as compared to the previous year. The previous year cutoff, you can see the previous year cutoff was 408 for the general category. इस तरीके का शायद इंफॉर्मेशन साइट पे भी अपलोड होगा, बट लास्ट ईयर का जो अपलोडिंग है 2023 के लिए. सो द cutoff for general category was 408 out of 1000 and 549 after interview, that is final. Then for EWS 329 and 483, for OBC 370, 506 and so on. So current year the cutoff has increased, and it has increased in all categories. So for the general category it was 430, for general category 430 and 568. That means if you score about 45%, I will say, if you score about 45 to 46% in the economic service written exam, with an average interview you will be getting selected. So aim of around 45-46% is considered as a good score. 45 to 46%, because the topper is scoring 451. तो 451 का स्कोर है टॉपर के लिए, मतलब 45% is the score for the topper. So if you are scoring obviously that with even with the average of interview final selection हो जाता. That means but ये consistently if you go by the marks of the interview phase, तो interview phase में more or less it is similar, 130, 132, 122, 128, 138, 136, 130. That means hardly a difference of 10 marks. तो इंटरव्यू स्टेज पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, एंड दे हैव गिवन मोर मार्क्स इन द इंटरव्यू स्टेज एज कंपेयर टू द रिटन. रिटन में अगर आप ये स्कोर देखते हैं तो ये अबाउट 44-45% के आसपास है, बट अगर आप इंटरव्यू में आउट ऑफ 200 देख रहे हो तो किसी जितने भी स्टूडेंट हैं इन ऑल द कैटेगरीज, द स्कोर इज मिनिमम आई थिंक 116, 118. दैट मीन्स अराउंड 60% एंड मोर देन दैट. तो 60% का स्कोर वो इंटरव्यू में दे रहे हैं, बट 45% का स्कोर आपके लिए ऑप्टिमम हो जाता है फॉर द रिटन पार्ट. सो नाउ कम्स द पैराडॉक्सिकल पार्ट. पैराडॉक्सिकल इज दैट डिस्पाइट दैट द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, द कट ऑफ शुड हैव बीन हायर, बट वाई द कट ऑफ इन द रिटन एग्जाम इज ऑलवेज कंसिस्टेंटली लोअर. मार्जिनली इंक्रीज हुआ, बट स्टिल वी कैन से दैट एज फार एज द नंबर ऑफ सीट्स आर कंसर्न, द कट ऑफ जस्ट 43% for the general category is a lower cutoff. So why it is difficult to score in the Indian Economic Service? Few reasons. Number one, the first important part is that the content of this economic service is very wide. So when I say the content is very wide, it means first see the syllabus part. For the written exam there will be 6 papers: general English, general studies, and economics 1, 2, 3 and Indian economy. So economics की category में 800 marks है and 200 marks for GS and English combined. When I say the first region, the content is very wide. Just see the content for G1. Now G1 paper is broadly divided into 2 parts. One is the micro numerical part, other is the maths, stats and econometrics part. The micro numerical itself, the micro part itself has 5 subunits. So you have to
completely cover the consumer theory of consumer demand, which will start from basic concept of budget line, preference, utility, choice, demand, reveal preference, buying and selling, Slutsky equation, intertemporal uncertainty. There are many chapters within that first unit itself. Similarly, a lot of detail in the theory of production, cost. Theory of value is mainly dealing with the market structure. Then all theories of distribution, Kaldor, Kalaski, Ricardian concept, Euler's theorem, marginal productivity, theory of distribution. All welfare criteria starting from Pareto optimality, then Kaldor's criteria, Setosky paradox, Arrow's impossibility theorem, AKS and welfare function. So a lot of detail is there in part 1 of G1, and the second part covers the complete maths, stats and econometrics part. Now the vastness of the syllabus is that if you devote completely for paper 1 itself, that means for example we will be having about 60 plus number of lecture for only G1 paper, around 25 and 30 for this, and 25 30, more than 30 for mathematical section. So first is that the content of economic service is very wide. This is for the first paper. The second paper is further divided into 8 parts. Major content here will be the complete macroeconomics, complete growth and development, entire international economics, balance of payment, global institution, and some smaller units like economic thought, national income accounting, and financial and capital market. But the content is very wide. So one problem basically with the economic service is that you have to cover a lot of topics in different papers, and the Indian economy paper itself has 11 subparts. So one reason is the wider content. Second reason why score is low is the marking scheme. And when I say marking scheme, it means even if you write the best answer, even if they are satisfied with your answer, they are instructed to give you optimum 50 to 55%, not more than that. If you are writing well, again I repeat, if you are writing a good answer, if they are satisfied, then they will give you about 50 to 55%. So obviously if your answer is average or below average, your marks will be less than 40%, which happens with most of the students. अब अगर इतने कम स्टूडेंट्स को वो कॉल करते हैं, they have yes in the 2024 they have called just 41 students for the interview. Out of that 41, 18 were selected, and you can see the marks of the topper also, 51 for the topper. That means the optimum score will be in that. So it is difficult to score that, and how you can score, what is they are looking for is basically the exactness in your answer, and exactness means textbook language. But textbook language will come only when you write that textbook language in the lecture, understand that content and write it and properly well detailed. That will be a part of the lecture. Everything will be dictated to you in a formal way. For example, suppose even if you get a basic question on crowding out, liquidity trap, then you must have a very detailed write-up available. What is the exact definition of it, implication of it, policy implication and limitation. तो अगर आंसर वहाँ पे about 150 words में लिखना है, you must have a 250-300 words written already in your notebook, so that you can write it there. So one step will be preparing that notes. That will be the part of the lecture. Second is that you have to learn that notes. You can learn it only by writing. That means you have to make a habit of writing 3 to 4 answer on a regular basis. 3 to 4 answer on a regular basis. 3 to 4 आंसर जो आप रेगुलर बेसिस पे लिखेंगे, उसके लिए ऑब्वियसली व्हाट विल बी द सोर्स विल बी द पास्ट ईयर क्वेश्चन. तो पास्ट ईयर क्वेश्चन में you'll have topic wise question separated for all these, for Indian economy, for public and finance, environmental economics, industrial economics. All topic wise question has been segregated. जितने भी topic wise question है वो सारे segregated है. वहाँ से आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो सब से इफ़ यू आर टेक 3 to 4 क्वेश्चन ऑन रेगुलर बेसिस, 100 डेज के अंदर आपके पास 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे. दैट इज इन एडिशन टू योर रेगुलर टेस्ट.
I will explain what is the role of the test series, and there are two different form of test available. One in which number of tests are 20, second which is starting from 19th of January only for the comprehensive test. In that category we will have 10 tests. I will discuss that. What I was explaining is that why it is difficult to score. So first reason is basically the content, second is the marking scheme, and third is the format of the exam. And when I say format of exam, it means these 6 papers will be on Friday, Saturday and Sunday. ठीक है, जैसे current year 2025 में these 2 papers will be on 20th of June, then 21st and then 22nd. That means you don't have any time for the revision, and you are too tired after writing 6 hours in a day that you don't have any energy left to revise the things. And due to lack of that revision, you are unable to reproduce a lot of things which you may have read over a period of time. So that require a very rigorous practice, regular practice है, जिससे बिल्कुल याद होगा आंसर. Only those students can write it there. So format of exam, the marking scheme and the vastness of the syllabus, these three things basically make it difficult to score. Now given that constraint, what you can do? Given that constraint, obviously the first requirement is to prepare a well detailed notes. Your first requirement will be that prepare a well detailed note for each and every topic. जैसे कंज्यूमर डिमांड ये स्टार्ट किया आपने, तो इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स है, बजट, कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंस, यूटिलिटी, चॉइस, रिबिल्ड, प्रेफरेंस, सब पे न्यूमेरिकल भी करना है और उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करना है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी. It is not that the complete paper is of numerical in nature. Remember, there is a method about the general economics. One, that the nature is basically numerical and only mathematical. A lot of question is now coming in the theoretical format. Even in the micro part, like welfare economics का question है, तो welfare economics से कभी भी वो numerically question नहीं पूछ रहे. They are asking about the Pareto optimality, Kaldor criteria, Setosky paradox, Arrow's impossibility theorem, AKS and welfare function. लाइक प्रीवियस ईयर में कोई वेलफेयर फंक्शन पूछा है. तो ये थियोरेटिकल पार्ट है. डिस्ट्रीब्यूशन से भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है. कंज्यूमर डिमांड से सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर देयर. स्टट्सकी इक्वेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का क्वेश्चन है. ऑल दोज क्वेश्चंस आर बेसिकली अवेलेबल इन अ टॉपिक वाइज. तो जितने भी कंटेंट आप वहाँ पे देख रहे हैं उसमें वो टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे. लाइक यू कैन विल जस्ट शो द few questions. This is for Indian Economic Service, theory of consumer demand. तो theory of consumer demand के जितने भी क्वेश्चन है वो एक जगह किए गए. It will help you to organize your preparation. जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने कंटेंट नोटबुक में लिखा है. Based upon that content, I said you have to make a habit of writing few answer. So if I say that based upon this class you can answer these 2 questions or prepare these 2 questions, you have to write it in the form of answer. What you will be writing in the class will be the class notes. It will be a notes, detailed one. And what you have to write here is basically in the form of answer. The purpose of writing that answer is that it will help you to learn the notes, and which is important. तो ऐसे जितने भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक का आपके पास क्वेश्चन टॉपिक वाइज फिल्टर्ड होगा फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. तो आपको वो ऑर्गेनाइज करना है. वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट. So that is all about this topic wise preparation. So cutoff is clear what you are aiming for. The cutoff is now higher as compared to the last year by almost we can say 2%. But if you aim for about 45 to 46, that will be I think a fairest goal. 45 to 50 के बीच का स्कोर चाहिए. मतलब 45-47% I will say it is very good score. Now one more thing related to this is in this type of low scoring exam जहाँ पे आपको 45% पे selection sure हो जाता है, even if in one paper you score more, and when I say more it means more than the average, about 110-115 का स्कोर अगर आप G1, 2, 3 या इंडियन इकोनॉमी किसी में भी कर लो. ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी में वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर बिकॉज द ट्रेंड है उसमें ज़्यादा मार्क्स इंडियन इकोनॉमी में मिलते नहीं हैं. सो if you are devoting a lot of time there, I don't think there will be much return, but return could be in G2
और सम फॉर सम स्टूडेंट्स G1 और G3. तो 1, 2 और 3 में बेसिकली टारगेट करना, प्लस इंग्लिश और जीएस को इग्नोर नहीं करना. इंग्लिश और जीएस विल हैव अ रोल टू प्ले इन दैट, इन दोज टू पेपर. अब आई विल से अबाउट बेयर मिनिमम 90 to 100 वो स्कोर होना चाहिए. 90 to 100 दैट मीन्स अबाउट 45 to 50% का स्कोर वहाँ चाहिए. बिकॉज सम स्टूडेंट्स नेग्लेक्टेड, और नेग्लेक्ट किया तो उनके स्कोर वहाँ पे, बिकॉज मार्किंग स्कीम ही डिफरेंट है, तो दे एंड अप पर स्कोरिंग अबाउट 60-70 इन टोटल फॉर बोथ. दैट विल बी अ पुअर स्कोर. सो अबाउट 90 to 100 and in any one paper G1, 2 it could be your जस्ट वर्क ऑन योर एडवांटेज. जो पेपर आपके लिए स्ट्रेंथ है आप उस पर वर्क करोगे, और उस पर अगर वर्क करते हैं देन यू कैन मैक्सिमाइज देयर. डोंट ट्राई टू मेक योर वीक पॉइंट इन टू अ स्ट्रेंथ. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक है, बट आप उस पर अलॉट ऑफ एफर्ट आप पुट कर रहे हैं, वो फ्यूटाइल है, क्योंकि वो कभी भी आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं देगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं देगा पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए. तो आप अपने स्ट्रेंथ पे पहले वर्क करोगे. इट डज नॉट मीन कि जो वीक है उसको इग्नोर कर देना है, बट वीक को मुझे वहाँ तक करना है जिससे वो डैमेज ना ज़्यादा करे. डैमेज कंट्रोल तक का काम करेंगे, बट अपने स्ट्रेंथ को बेसिकली आपको वर्क करना है. नाउ बिकॉज आई विल जस्ट सी द एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी how you can, because some students have the advantage in numerical part, some students may have a better advantage in the theoretical part or descriptive part. So how you can deal with that paper 1, I will just discuss the paper pattern and the structure. Now regarding this, just the test series part, the test series part will have, in fact there are two type of tests or test series. One test series started, we can say the old one, from 22nd of September. ये already ongoing है. In that test, total number of tests is 20. Out of that 20, General Economics 1 will have 6 tests, because उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है और दो सेक्शन में फर्दर वो डिवाइडेड है. फिर G2, G3 और इंडियन इकोनॉमी के अंदर 4 टेस्ट ईच होंगे, मतलब 12 and 6 18, एंड GS और इंग्लिश के 1 टेस्ट. तो देयर आर सम लॉट ऑफ सेक्शनल, एंड मतलब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल G2 2 सेक्शनल हो गए, 2 कॉम्प्रिहेंसिव हो गए. एंड इन द न्यू टेस्ट which will start from 19th of January, total number of tests will be 10, and all are comprehensive. So G1, 2, 3 and Indian economy 2 each, and for GS and English 1 each. So 10 tests only, comprehensive one. So you can choose any one, the old one as well as the new one. Although बैच के साथ जो न्यू बैच बिगिन होगा फास्ट ट्रैक कोर्स, उसके साथ वो न्यू वाला टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगा. But if some student want to write for the comprehensive test, they can request for that. Test series में obviously you will be getting the model answer of those tests, as well as there will be a discussion lecture. So what you have to write in there, we will be providing you the detailed answer of that, and you will be having the discussion of that test, plus you can have a one-to-one discussion of your answer also, because everything is online. So you have to discuss, you can write it offline here, no problem, but you have to submit it online. So one-to-one discussion of your answer sheet will be possible, and you can discuss it with the faculty. And so in the regarding the test series, 20 tests you can manage. That means enough time is there, still 15 days for December month, and after that 5 complete month is there. Exam will be on 20th of June, I think. So you have enough of time to write that 20 essays. So preferably write the sectional one as well as the comprehensive one. Now I was discussing what was the pattern of the question. That means if you are explaining or taking G1 for example, suppose, तो G1 के अंदर एक dilemma रहता है students का, कि the approach is mainly a numerical approach, and if you have strength in the maths but weak in the micro, or you are good in descriptive but you are not that much
good in the econometrics paper. Just see the paper pattern and use it to your own advantage. Remember, you attempted 200 marks, but question paper 200 marks का नहीं है. Question paper तो 286 marks का है. I will just show what is the I mean. पेपर जब आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जितने भी पेपर, बिकॉज यू आर देयर आर मेनी ऑप्शंस. ये इकोनॉमिक सर्विस का पेपर 2024 का है. अब फर्स्ट क्वेश्चन ये कंपल्सरी हो गया सारे क्वेश्चन, तो 7 × 5 7 पार्ट्स हैं एंड 5 मार्क्स. सो पहले सेक्शन के अंदर 35 मार्क्स है, ये कंपल्सरी हो गया. सेकेंड सेक्शन में यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, एनी 5 आउट ऑफ 7. तो 5 × 18 18 × 5 90 मार्क्स का ये सेक्शन भी है. बट रिमेंबर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स 126 मार्क्स है. अटेम्प्ट आपने 19 मार्क्स का किया है. 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट तो 5 किया, तो 18 × 5 90 है. थर्ड सेक्शन के अंदर, इन दैट थर्ड सेक्शन यू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 और ऑल 3 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हो गए. 25 × 3 75. बट क्वेश्चन यहाँ पे 125 है, 5 क्वेश्चन है. तो सेक्शन सी का वेटेज हो जाएगा 125 का क्वेश्चन है, यू आर अटेम्प्टिंग 75, विच मीन्स सेक्शन ए 35, सेक्शन बी 126 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है, यू आर हैव टू अटेम्प्ट 19 मार्क्स. थर्ड सेक्शन 125 मार्क्स क्वेश्चन इज गिवन, यू हैव टू अटेम्प्ट 75 मार्क्स. So if you add the total, you are attempting 200 marks question after 286. तो इस 286 का जो आप ब्रेकअप लोगे पूरे सिलेबस का, तो ये 286 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉर माइक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमेट्रिक्स एंड सो ऑन. तो इट इज़ नॉट कि ये इक्वल डिवीज़न होता है. तो 286 का डिवीज़न अगर इक्वल भी ले तो लेटर से 140. तो अगर किसी ने ओनली माइक्रो का क्वेश्चन कर दिया तो 140 मार्क्स का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकता है. जस्ट कंप्लीटली इग्नोर द मैथ साइड इवन देन. तो इफ़ यू चूज ओनली वन पार्ट ऑल्सो, रिमेंबर यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 150 मार्क्स बाय टेकिंग और ओनली वन, दैट इज ओनली मैथ्स और ओनली माइक्रो पार्ट. पैटर्न ऑफ G2 is 3 and Indian economy is slightly different as compared to paper 1. In second paper you have to attempt 5, 6, ये कंपल्सरी क्वेश्चन हो गया. 5 मार्क्स के क्वेश्चन यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन होंगे. इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन यू कैन से 2.5 + 2.5 फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. सेकेंड 6 आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9, तो 15 × 6 19 का पेपर ये सेक्शन भी है, बट आउट ऑफ 9 है. दैट मीन्स सेकेंड सेक्शन में 135 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू आर अटेम्प्टिंग 90. एंड थर्ड इज 4 आउट ऑफ 6, तो 20 × 6 120 का ये सेक्शन है, आपको अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स का क्वेश्चन. तो सेकेंड पेपर के अंदर, और ये पैटर्न थर्ड में भी है और इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी है, यू आर अटेम्प्टिंग 200 आउट ऑफ 285. क्लियर. तो आप जब स्टडी प्रिपेयर करते हो तो ये देखना कि यू आर अटेम्प्टिंग 200 मार्क्स बट क्वेश्चन पेपर 285. दे यूज़ द ऑप्शंस वेरी स्मार्टली. आपको पता है कि ये 285 का डिवीज़न होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर तो 285 का होना है. तो सम क्वेश्चंस आर बीइंग गिवन इन ऑर्डर टू लीव दैट क्वेश्चन, सो देयर विल बी सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यू कैन यूज़ द ऑप्शन इंटेलिजेंटली. कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है, कंप्लीट पेपर में नहीं, जस्ट वन टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेक्शन, बट डोंट गो फॉर दैट, मतलब डोंट गो डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट. Just do the past year question. If the question will be on that pattern, you can attempt it. But उसके पीछे नहीं जाना है, ठीक है, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन दिए ही जा रहे हैं ऑब्वियसली छोड़ने के लिए, तो आपको ऑप्शन को यूटिलाइज करना है प्रॉपरली. सो दिस विल बी दिस द पैटर्न. तो जस्ट कीप दोज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज what will be the source part of it for any particular topic. source part क्या होना है और how to prepare, how to approach. So your first stage will be basically to prepare a very detailed notes. ठीक है, वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो और ये आपने हो सकता है कर रखा हो.
or you can take help of the lectures as well, because everything will be explained here in a very detailed manner. So your first part with that means, say if you write about 10 sites every day, 10 pages, 250 लेक्चर है, तो मोर देन 2000 पेज का राइटअप आपके पास रेडी हो जाएगा. दैट विल बी फॉर डिफरेंट पार्ट्स, फॉर माइक्रो, फॉर मैक्रो, फॉर इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड सो ऑन. तो राइटअप काफ़ी हो जाएंगे. टेस्ट सीरीज के कैटेगरी में जब आप मॉडल एंड से मिलेंगे, टेस्ट सीरीज इटसेल्फ विल बी हैविंग अबाउट कंप्लाइंट अगर आप करेंगे फॉर ऑल मोर देन 400 क्वेश्चंस होंगे. 2 साइड का भी अगर आंसर है तो वहाँ भी आपके पास 800,000 पेज का राइटअप होगा इन द फॉर्म ऑफ आंसर. तो कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है. द ओनली थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज़ प्रैक्टिस एंड राइट इट मल्टीपल टाइम्स. जितनी बार आप आंसर को लिखोगे उतना एग्जैक्ट लिखेंगे. एग्जैक्टनेस आपके फर्स्ट 2 पैराग्राफ में बिल्कुल होना चाहिए. एग्जामिनर भी ये नहीं कि कंप्लीट 1 to 1 एक एक लाइन आप पढ़ रहे, एक एक वर्ड्स पढ़ रहे हैं. दे विल बी मोर इम्प्रेस्ड बाय योर फर्स्ट 2 पैराग्राफ, एंड फर्स्ट 2 पैराग्राफ से इमेज क्लियर हो जाता है कि दिस आंसर शीट इज़ अबव एवरेज, बिलो एवरेज. आप टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो या अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, वो सारी चीज़ें पहले 2 पैराग्राफ से क्लियर हो जाती है. इट इज़ सपोज टू बी बेटर दैट इफ़ यू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी में उस पर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. दे आर लुकिंग फॉर द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज. इफ़ यू कोट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्ट, इट विल बी फेचिंग मोर मार्क्स. इफ़ यू कोट डायरेक्टली फ्रॉम द साल्वाटोर, डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रॉयन, तो जो भी कोर बुक है उससे अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हैं आंसर, तो वो लैंग्वेज सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि ये बुक का लैंग्वेज है. एंड दे आर लुकिंग फॉर बेसिकली दोज टाइप ऑफ आंसर. क्लियर. तो फर्स्ट स्टेप इज टू prepare or write up that in the note. Then from that note make a daily answer writing practice, and then write it in the test, and then write it further better in the final exam. Clear. So this was all about this. And regarding the sources, obviously आपको सर्च नहीं करना, जो कंटेंट होगा वो फिजिकल फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे, प्लस a lot of content will be uploaded in the e-book category. लाइक कंज्यूमर डिमांड है तो उसे आप वेरिएंट से भी, वर्कबुक से भी पढ़ सकते हैं, निकोलसन आइडिया से भी है. सो विल बी कंबाइनिंग ऑल द न्यूमेरिकल पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट एंड प्रोवाइडिंग इट टू यू. सिमिलरली फॉर दिस पेपर 2, मैक्रो के सेक्शन को ब्रॉडली एज यू नो क्लासिकल और केनिशियन में डिवाइड कर लेते हैं. क्लासिकल के लिए फ्रॉयन है, ISLM वाले टॉपिक के लिए डॉर्मोशन फिशर है, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट के लिए ब्लैंचार्ड है. तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, यू हैव टू रीड सेलेक्टेड चैप्टर ऑफ दोज बुक्स. So compilation of those chapters are included in your different spirals. Again for international we have Paul Krugman or Salvatore. Theories of balance of international trade better to cover from the Paul Krugman. Balance of payment section it will be better to cover from the Salvatore. So regarding the source you don't have to search. We have already searched it and we have compiled it and it will be provided to you in the written form. तो वो आपको एक स्टडी मेटेरियल का एक पार्ट होगा जो वो फिजिकल कॉपी मिल जाएगी. उसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें जो सोर्सेज हैं वो मिल गए. सेकेंड एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट विल बी द क्लास नोट्स, बिकॉज बाय रेफरिंग टू दोज नोट्स वी विल बी कंडक्टिंग द लेक्चर्स. तो लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल में विल बी प्रोवाइडिंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. ठीक है. सो इट विल बी कवर्ड फॉर सिमिलरली फॉर G3 and for the Indian economy. Regarding the Indian economy, if you see the question of the last year, about 5 to 6 questions were from the government program. So if you combine all those programs, I think about relevant program में 15-20 total program होंगे. So the content for that will be made available out of that program. Although last year it was, we can say, biased in the form, more questions were of that nature, but it cannot be considered as a trend. But there will be some element of the current part, so we'll take care of the current part. And when the survey will come in the month of January end or February, the all data will be updated by that economic survey, so that will be a part of the content. So upgradation will be done with the economic survey part. Okay. And the static part you can cover from Misha and Puri, and the dynamic part will be basically covered in the lecture part. Static part काफ़ी अच्छे से explain है. That means there is a dilemma in the Indian economy ki whether to go for Uma Kapila or Misha Puri. Uma Kapila, although better I will say,
इन द सेंस डिस्क्रिप्शन ज़्यादा, बट वो जर्नल्स हैं, वो आर्टिकल्स हैं, नॉट डिज़ाइन टू राइट एन आंसर, बट इट इज़ अ गुड टू रीड. बट एज फार एज आंसर इज कंसर्न, आपको आंसर लिखने के लिए यू नीड पॉइंट्स. सो दोज पॉइंट्स आर वेल डिटेल एक्सप्लेन और गिवन इन द मिशन पुरी बुक, इंडियन इकोनॉमी. So again, you don't have to read the entire book, you have to read the selected chapters of that. So we'll be covering those part in the Indian economy section. Clear? So I think we have explained all regarding this economic service upcoming course, which will start from 7th of January. So regarding any concern or query, you can call us or contact us about any clarification of the upcoming course. So I hope this lecture will help you in taking a decision and approaching the exam in a right manner. Thank you.